report where several Indians are stuck in regions across Sudan, which has turned out to be the main battleground. Amidst these circumstances, News 18 India's Vivek Gupta spoke to some of the stranded Indians. This is a look at that conversation. Take a look. सूडान में कितने दिनों से हो? अभी सर 3 महीने हुआ सर मेरे को आके, और एक 4 महीने तो लगभग हो गया सर मेरे को यहाँ पे। जो वीजा को मैंने दिया था तो यहाँ पे 15 दिन 20 दिन यहीं पे रुपये कट गया सर। अच्छा, अभी वहाँ पे क्या हालात कैसे हैं? सूडान में क्या हालात कैसे हैं? हो रहा है सर, अभी जो हम है उसी एरिया के बाजू में सर असेंबली है, जो असेंबली पे अटैक हो रहा है, और पूरा साइड में पूरा टैंकर से बम गिरा रहा है सर, और पूरा जो फायरिंग चल रहा है इसमें 2 आर्मी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जो साथ में जो चल रहा है सब बहुत हो रहा है सर। यहाँ पे रहने का जो खाना पानी का पूरा प्रॉब्लम हुआ है सर। अभी टोटल कैसे रह 87 मेंबर्स सर। मैं आपसे पूछूं कैसे रह रहे हैं आप लोग? दिखा सकते हैं आप किस हालात में हैं आप लोग? वही सर दिखाते हैं पूरा जो ये जो है 30वां फ्लोर है सर। यहाँ पे रूम में पूरा रूम खाली हुआ है, पूरा रूम कौन सा नहीं, पूरा रूम के अंदर है सर। जो यहाँ के सिटीजन है, जो यहाँ के पीपल्स है, वो सब पूरा निकल गए हैं, उसके छोटे छोटे गांव चले गए हैं सर। यहाँ पे पूरा इंडियन ही है हम सब। तो आपके साथ फैमिलीज हैं? फैमिलीज हाँ फैमिली है ना सर, फैमिली से पूरा यहाँ का कारतून का पूरा एरिया जो है बिजली और पानी कट गया है सर। यहाँ का वही समस्या हो रही है। फैमिलीज को दिखाइए किस तरह रह रहे हैं वो लोग। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे आप लोग कैसे हालात में हैं वहाँ पे अभी? हम ऐसी हालत में है, बोलो मत कि हमारे क्या हम बाहर भी नहीं निकल सकते। कोई खाना पानी का बहुत बड़ा वादा हो रहा है, यहाँ पे पीने के लिए पानी का वादा हो रहा है, और यहाँ पे सोने के लिए जो जहाँ पे हम होटल पे ठहरे हैं, ये होटल वाले जो वो होटल वाला भी सारा भाग गया है मेरे को छोड़ के। होटल में ऐसा ही छोड़ देगी। यहाँ पे बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, मगर यहाँ पे पानी भी नहीं है, और बाथरूम जाने टॉयलेट जाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है। और तो होता चावल, तो उसमें चावल में पानी तो डाल के पका के खाएंगे, तो वो भी नहीं है। कुछ भी अपना गुजारा तो हम कैसा भी करें, लेकिन क्या है कि रात दिन ऐसा हो रहा है। यहाँ पे दीपावली जो अपने इंडिया में कैसी दीपावली होती है, वैसे ही यहाँ पे गोली का आवाज यहाँ पे चल रहा है। रात और दिन बोलो मत, इतनी आवाज हो रही है कि चैन से बैठते नहीं बच्चे लोग, और सोते भी नहीं बच्चे लोग। ऐसे डर के मारे पूरे बिल्डिंग तर कांप उठती है आवाज में। ऐसा परिस्थिति है यहाँ पे मेरा। फैमिलीज को दिखाइए, फैमिलीज कैसे किस हालात में? जो लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो कैसे हैं अभी? लेडीज बच्चे तो सही सलामत हम तो रूम में सब रखा है, तो बाहर तो कोई नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी हम इसी प्रकार में हम बाहर जाएंगे तो हमें तो इमीडिएटली वो गलियों में ऐसे लेके घूम रहे हैं, और बंदूक और तोप AK-47 ऐसे लेके घूम रहे। बोलो मत, इतना जबरदस्ती हो रहा है कि हमारे फैमिली लेडीज देखिए, हम दिखा दिए, हम आप देख लो सब हमारे फैमिलीज का, ये सब हमारा फैमिली नंबर है, सारे खड़ेला है। और रूम में यहाँ पे ना है ना, हम 80 पे 90 आदमी 9 लोग यहाँ पे कह रहे हैं, 89 ऑल पीपल, और बहुत सारे आदमी है यहाँ पे, और नीचे भी सब रूम में है। पूरा बिल्डिंग वाला ने पूरा बिल्डिंग छोड़ के वो भाग गया है। ये देखो आदमी जा रहे हैं, पूरा गली कैसी पड़ी है देखो, शमशान घाट के जैसा। कुत्ता भी नहीं जा रहा है ऐसा हालत में। और देखिए पूरा, और इधर देखिए, इधर जैसे आदमी भी एक भी नहीं है, ऐसा ठहरेला है। यहाँ पे फायरिंग हो रही है? यहाँ पे फायरिंग हो रही थी रात में, आप बता रहे थे। फायरिंग यहाँ पे बहुत हो रही है। ये सब जला के रखे, देखो काला काला जो टायर पड़ा है, पूरा टायर जलाते हैं लोग शाम के टाइम में, बहुत जबरदस्त कर देते। और इधर की हालत देखिए, इधर भी ये बहुत सारे आदमी मर गए है यहाँ पे। Okay, to bring us a lot more in terms of context on this story, my colleague Ritu is with us right now. Ritu, we just heard from citizens who say they are stranded in Sudan. We heard what they had to say, some of them saying they hadn't had food for at least 4 days now. 181 Karnataka citizens by some counts. Can you just bring our audiences more context on their story?
Why are such a large number of citizens from Karnataka in particular there? What is the story of their migration and what is their status as we speak? Well, you see, all this while it was said that around 31 members were targeted there in the Sudan with the kind of civil war that is taking place there. But now you see the numbers have increased to more than 100, in fact, and all of them are being and urging for the government, the Indian government, and also the state government for a help. But of course, that's the whole reason that we're also getting to see a politics erupting over this issue as well. Well, now this being an election year as well in the Karnataka, you see now the former Chief Minister Siddharamaiah, in fact, had went on to take this whole issue on Twitter and tagged the External Affairs Minister as well, Jaishankar, and asking him to immediately intervene and help and understand the kind of situation and that is right now in Sudan and the kind of challenges that the Indians are facing, and especially more number of people from the Karnataka are stuck there, and that's the whole reason you see wherein the BJP leaders in fact are now coming out and lashing out at Congress leader as well, saying that why is that the politics over every situation is important for every thing, why is that the Congress really want to poke their nose. So that's the kind of politics that we are also witnessing right now. But of course, in the Karnataka, the state government has announced, in fact, had come out with two helpline numbers where they are saying that the emergency control rooms are working in a fast manner there again to bring back, to evacuate all those the people who are stuck in the Sudan. But of course, the Congress says that this is just not enough. There seems to be a delay in that as well, because the situation unfolded on April 14th and almost like 4 to 5 days now. And why is that the Indian government and the state government not swinging into an action at the earliest? Okay. Ritu, just stay with us. Our colleague Siddhant is also with us to bring us more context on the External Affairs Ministry and the situation in Sudan. Siddhant, Sudan is the third largest nation in Africa, and yet experts are saying that this crisis could lead to the country entirely collapsing. Could you bring our audience a little bit more context on the issue itself, what's played out in Sudan over the last few days? And then if you could tell us the series of advisories we've seen from the External Affairs Ministry to Indian citizens who are there. Well, yes, that's right. And in fact, Sudan has been witnessing the civil unrest in country since this country got independence from UK. And in fact, it is the one country which has witnessed maximum number of political coup. Now, this time around again, the political leadership in Sudan, which is currently being ruled by military regime, and there's a de facto ruler, had promised elections in the country in 2023. But it looks like neither him nor his rival, who is currently heading the paramilitary force in Sudan, is interested in announcing elections. What they are doing is right now getting involved in a fight with each other, and that has resulted in a situation of unrest in the country. And in fact, the situation is so bad that not just Indian government, but in fact various countries across the globe has given advisories to their citizens stuck there